Hello students, hope you all are healthy and this video is for class 7th. Today we'll discuss the long answers and exercise of chapter 3 of Geography Changing Earth. So I've given you homework questions of long answers in homework and I hope you all have completed your short answers to the following questions already, which we have discussed in our last classes. So let's continue with the first long question, that is, what causes the movements and changes in the landmass of Earth? So the question is asking for the reasons of movement and changes in landmass. तो वो क्या कारण है जिससे movement या changes होते हैं हमारे अर्थ के landmass में? So the answer is the movement of tectonic plates is caused by convection currents. So the first reason is movement in tectonic plates, and why this movement in tectonic plates caused this movement is caused by convection currents in the molten rock in earth's mantle. तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट होता है ये मॉल्टेन रॉक्स के द्वारा जो कन्वेक्शन करेंट्स होते हैं उसकी वजह से मूवमेंट होती है, एंड विच इज़ बिलो द अर्थ्स क्रस्ट. द earthquakes and volcanoes are the short term results of these tectonic movements. और टेक्टोनिक मूवमेंट्स का जो शॉर्ट टर्म रिजल्ट होता है वो होता है अर्थक्वेक या वॉल्केनो का आना, एंड द लॉन्ग टर्म रिजल्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इज द मूवमेंट ऑफ एंटायर कॉन्टिनेंट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. नाउ आवर नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन was what are active and dormant volcanoes with example. So the answer is active volcanoes. A primary definition of an active volcano goes as follows. An active volcano is a volcano that has been erupted in 10,000 years at least once. तो active volcano वो होता है जो लगभग पिछले 10,000 सालों में एक बार कम से कम erupt हुआ हो. These are the volcanoes that have the tendency to erupt at any time in the present. और इनमें अभी भी ये क्षमता होती है कि ये आने वाले सालों में कभी भी erupt हो सकते हैं. And some examples of these volcanoes are Mount Fuji in Japan and Mount Etna in Italy. Now, dormant volcanoes. These volcanoes have become quiet after their eruption and are also known as sleeping volcanoes. Means these volcanoes become quiet after eruption and there is no chances of eruption. They have not been erupted in long time and do not show any indications of eruptions in present or near future. Now our third homework question was, what are the three different types of earthquake waves? So in our last class we discussed the three different types of earthquake waves, and the first one wave is primary waves. So they are the first waves and travels fast. They are known as push waves or the P waves. Secondary waves, these waves are the second waves with a lesser rate of movements than the primary waves. The third one is surface waves. Surface waves, these waves travel at the surface and causes the most destruction. तो ये वेव्स जो होती हैं ये सबसे ज़्यादा तबाही मचाती हैं और ये कहाँ पे ट्रैवल करती हैं? सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे ट्रैवल करती हैं, एंड दे आर स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल. नाउ द फोर्थ होमवर्क क्वेश्चन वाज, व्हाई डू वॉल्केनोज इरप्ट? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ इरप्शन इन वॉल्केनोज? सो द आंसर इज़ the molten magma is pushed. We all know that there is molten magma. पिघला हुआ जो hot molten magma होता है वो अर्थ के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेशर क्रिएटेड बाय द हीट इनसाइड द क्रस्ट, एंड देयर इज़ हीट इनसाइड द क्रस्ट. अर्थ के इनसाइड में, इनर पोर्शन में बहुत ज़्यादा हीट होती है जो प्रेशर क्रिएट करती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस pressure the molten magma comes out. So erupting molten material from the openings available, these eruptions are called volcanic eruptions. The cone shaped opening is called a crater and the long tube is called a vent.
A volcanic mountain or cone is formed when the layers of molten lava cool down over one and another. Molten magma comes out from the opening that is called crater, which is connected with a long tube called vent. What causes earthquakes? Our next homework question. When the lithospheric plates move beneath the surface, they tend to cause vibrations. During volcanic eruptions, the plates are sometimes moved so violently that they cause the earth to shake. These shakes and vibrations travel along the earth's surface and are known as an earthquake. The point or place where the earthquake originates inside the earth is called a focus. तो अर्थक्वेक क्या होता है, क्या कारण होते हैं अर्थक्वेक के? द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव बीनीथ द अर्थ सरफेस. तो जो लिथोस्फेरिक का प्लेट्स का मूवमेंट होता है वो कारण होता है अर्थक्वेक के आने का. एंड दीज मूवमेंट्स क्रिएट वाइब्रेशंस. ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस द प्लेट्स आर समटाइम्स मूव्ड सो वायलेंटली दैट दे कॉज द अर्थ टू शेक. नाउ we'll discuss exercise. Fill in the blanks. First, we'll discuss fill in the blanks. The first one is the vertical movement cause pushing of crust dash or dash. So as I've told you, vertical movement means up and down. So the vertical movements cause pushing of crust up or down. The result of dash is the creation of rift valleys. So the result of faulting is the creation of rift valleys like Narmada Valley in India. The dash are mountain-like structures that have an opening from which active material like lava, gases, ashes come out. So the answer is volcanoes. Volcanoes are mountain-like structures. Now the next one is the point or place the earthquake originate inside the earth is called. अभी हमने डिस्कस किया. The point or place of earthquake originates inside the earth is called focus. तो अर्थ के अंदर से जहाँ से उस पॉइंट से जहाँ से earthquake originate होता है that point or place is known as focus. And the next one is the point on the surface of the earth. और पॉइंट वो पॉइंट जो अर्थ की सतह के ऊपर मतलब पृथ्वी की सतह के ऊपर होता है जस्ट अबव द फोकस. फोकस के जस्ट ऊपर. फोकस क्या है? इनसाइड द अर्थ. द पॉइंट विच इज़ इनसाइड द अर्थ एंड विटनेसेस द मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एपीसेंटर. तो हम फोकस के जस्ट ऊपर अर्थ की सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? एपीसेंटर. नाउ the next one is write T if the statement is true and F is the statement is false. So the first one is the hot liquid that squirms inside the earth is called magma. So yes, that hot liquid present inside the earth is called magma. जो पिघला हुआ गर्म एक लिक्विड अर्थ के अंदर मौजूद होता है. स्क्विम मीन्स जो कुलबुलाहट होती है उसमें. That is called magma. क्या उसको magma कहते हैं? Yes, that's true. Now the next one is the Pacific volcano belt is called the Pacific Ring of Fire. That's also true. Pacific volcano belt is called Pacific Ring of Fire. And the third one is dormant volcanoes never erupt. So false. Dormant volcanoes can erupt in future, but the extinct volcanoes cannot erupt, means can never erupt. तो extinct volcanoes होते हैं जो dead volcanoes होते हैं जो कभी erupt नहीं होते हैं. लेकिन dormant volcanoes सिर्फ sleeping volcanoes होते हैं, means they can erupt. So that's false. The next one is a telegraph is used to measure earthquake. No. What is used to measure earthquake? If you remember, the tool which we use to measure earthquake is seismograph. So we use seismograph to measure earthquake. So this is false. The next and last one is earthquake cause
Land displacement? Yes, earthquake cause land displacement. That's true. Now, take the correct answers. The first one is the lithospheric plates are dash moving. So, the lithospheric plates are always moving. जो lithospheric plates होती हैं वो हमेशा move करती हैं. But the movement is very slow, which we can't feel. The next one is a volcano that may erupt any time is called, वो volcano जिसमें कभी भी eruption हो सकता है किसी भी time, that volcano is known as active volcano. The next one is an extinct volcano is dead. So an extinct volcano is dead forever. तो एक extinct volcano होता है वो हमेशा dead रहता है, मतलब ना तो पास्ट में कभी उसके एरप्शन के कोई न्यूज़ होती है और ना ही तो फ्यूचर में उसके एरप्शन के कोई चांसेस होते हैं. एन अर्थक्वेक मेजरिंग 7.8 ऑन रिक्टर स्केल इज़ डिस्ट्रक्टिव. वो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाने वाला होगा, विनाशकारी होगा. बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अर्थक्वेक मेजरिंग 6 और above 6 is very destructive. Now, the last one is the point on the surface of the earth where maximum destruction is inevitable during an earthquake is called. तो अर्थ के सरफेस की वो पॉइंट या वो प्लेस जहाँ से मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड एपीसेंटर. उसको हम क्या कहते हैं? एपीसेंटर. So here we finished our chapter, we finished our short questions, long questions, exercises. Now you have to read the chapter properly and complete all your work properly. And do not forget to give your attendance in comment section whenever you just complete your video. जैसे ही आप अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं वैसे ही आपको कमेंट सेक्शन में आके अपना नाम विद योर करेंट क्लास एंड सेक्शन वहाँ पे अपनी अटेंडेंस देनी है एंड दैट इज़ नेसेसरी आफ्टर ईच एंड एवरी वीडियो. सो स्टे सेफ. थैंक यू.